नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेट्स टॉक में, जहां हर कहानी जरूरी है। तो प्रेरणात्मक कहानियों के सफर में मैं ले चलती हूं आपको बच्चों की चुलबुली दुनिया में। आज ऐसे बच्चे के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूं जो न सिर्फ अपनी जापान की यात्रा से सिर्फ एक बुक लिखा, बल्कि वो बुक का सफर आज 3 बुक के सफर में बदल गया है। उनकी किताबें जो है इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर में जो है डिस्प्ले हुई और उसके बाद बेस्ट सेलर भी बनी। और न सिर्फ बेस्ट सेलर बनी, बल्कि इसके बाद उन्हें जो है एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का खिताब मिला, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का खिताब मिला और बेस्ट यंगेस्ट ऑथर का भी अवार्ड मिला है उनके। तो जहाँ पे बच्चे आज गेमिंग्स की दुनिया में उलझे रहते हैं, पढ़ाई के प्रेशर में, डिस्ट्रैक्शन के बावजूद जो है समृद्ध चैटर्जी ने महज 12 वर्ष की उम्र में खुद को एक लेखक के रूप में निखारा है। मिलते हैं समृद्ध चैटर्जी से। तो स्वागत है आपका समृद्ध हमारे चैनल लेट्स टॉक में, वेयर एवरी स्टोरी मैटर्स। सो आई वांट टू आस्क यू वन थिंग कि एट जस्ट 12 years of age, how can you have written 3 stories, 3 books that has been displayed here? So can you tell me the journey behind it? Okay, so my journey actually started in Japan, where I went for 4 months. I went there thanks to my mom because she actually got a sort of a, you can say it was sort of a proposal for research purposes. So she went there for 4 months, and me and my dad also went there. It was pretty tough going there because my mom had to take permission from my school, book tickets and everything. And the hardest part was taking permission from my school, but luckily my school granted permission. They said this was the first and last time, and they even made my mom sign in a piece of paper, on a piece of paper. So that was pretty tough. So after all this was sorted out, we went to Japan. We stayed there in Hiroshima for 4 months. We really enjoyed our trip there. Japan is a really nice country. If I start speaking about Japan, I cannot end. Okay, so for basics, our host for the trip was Kaushik Das. I mean, he's a professor in Hiroshima University, where my mom did her research for 4 months in Japan. And he's a really funny, nice, kind, and caring guy. And I really respect him. And I call him Kaushik Jethu because Jethu means uncle in Bengal. Okay. And calling someone uncle gives homely vibes, sort of. So I call him Kaushik Jethu. And this name is filled in my book. It is written like many times. It's written like wherever we go, either Kaushik Jethu comes with us in the first few trips. He helped me explore Japan in many new ways. He taught me many things which I didn't know before, and he's a really nice guy. Okay, so in Japan, one evening, I was writing my diary. Okay, so about the diary thing, my mom actually gifted me a diary for me to write every day in Japan, because when I would grow older and old, I would probably forget the memories I made here. So my mom gifted me a diary. And I used to write in my diary every day, and it became a regular habit. And I did not have any hesitation to write whatever I felt, my feelings, my experiences, whatever I felt, I wrote down without any hesitation. So I used to write every day, and one evening when I was writing my diary, my mom came back from Hiroshima University. We actually lived in a sort of an apartment, and our apartment had a backyard too, where we played cricket, badminton, and stuff like that. So we actually brought cricket and badminton from India. Okay. So it was pretty fun playing them there anyway. So that evening when I was writing my diary, my mom came back from Hiroshima University, and she said that, okay, you are writing your diary very nice. She opened her shoes, and then she told me about Anne Frank. Okay. So for starters who don't know Anne Frank is actually a Jewish girl. She was a Jewish girl rather, unfortunately. She wrote a diary during the Holocaust period, and every day it was the period was it was a very bad period because people were being tortured and everything, and she was a Jewish girl, so she had to hide from the Nazis, and she struggled a lot. She wrote about her experiences in a diary, which unfortunately she and her mom died. Her father was alive. So her father published the book the diary in the form of a book, and the book has been translated in many languages. It's a very popular book. Many people know about it. Many people have read it. They love it. So my mom told me about this book,
And I got really inspired because I thought if a girl like her can write a diary in such bad conditions, Yes, such like a difficult yeah, lights situation are off, like every day everything. the lights are off, they are eating only one food, they're only eating one potato Yes, the entire just day. to survive. Yeah, many people are Hmm. eating that same potato. So if someone can write a diary under these conditions, I'm living in way better conditions. Why Yes. can't I write a diary properly and publish it into a book? So I told my Right. parents about that right then and there, and they said that yeah, if you write it, and if you write it nicely, and if you complete it, most importantly, we can definitely publish it into a book. They later revealed that they did not really think I would be able to complete, even though they had they had a faint hope I would. I eventually ended up completing my diary, and it got published as a book when I returned from Japan to India in 2023. Okay, so viewers, I just want to show you. This is the book Yeah. about which he is talking about, and this is just the starting of his journey, and many more to come to know. So let's start with some different question. Yeah, That as because you are a kid, so homework is gone wild for you or pure passion? I don't really do my homework. I don't get the concept of homework. I mean, whenever I get homework, I either do it at school or I don't really do homework at home, because for me, my home is for studying the chapters and the subjects, not really for doing homework that the school gave. I actually finish my homework at school, or rather the next day I go to school. I complete it before the teacher takes it, Wow. and half the time I fail. Okay. So yeah, I'm really bad in copy submission. So That's a it's bad thing. it's a very good thing that you are accepting in front of everybody that Yeah, I have to yeah, accept. yes, that is very good. Most of the student whenever they used to come, they said that I'm very good at doing homework and all. But you are very honest. That is very good. Thank So you. most kids of your age right now, they are glued to mobile games, as you know. So what made you choose this writing for books and all? There was a phase in my life where I was also glued to video games. Okay. I actually every time I play video games, I stop after a while, then I again start after a while. I currently don't play video games. Actually, for me right now, if I start playing a video game, I eventually become bored and stop it. Okay. So according to me, I have many friends who don't play video games. They read books. Many people are arising right now. They call themselves bookworms. Okay. They like reading books. Many of my friends love reading books. They're obsessed with book reading, and I think this culture, this bookworm culture, should continue because reading books is not just for spending time. Reading books can help you a lot. It can help you increase your visualization, imagination. It can improve your communication skills. It can improve the language you're reading the book in. Suppose English. It can keep you happy, and it can overall you can overall spend your free time in a more positive way rather than playing video games. I think video games, okay, if you really like playing video games, I think you can play, but for a limited time, because according to me, when I used to play video games, if I played for too long, I would myself feel guilty after a while. And I think every person at least faces that, because so if you face that, I think you should limit your screen time. And I think everyone should have a balanced day, because you should balance your book reading, you should balance your studies. Basically, you're talking about some routine, daily routine. Not that routine. timing. It's like a balanced day means like you had fun too, you did work too, and you enjoyed yourself too. Like for the fun time, you played video games too. Okay, so if you don't feel guilty, you played for a little while, and then you study. So But nowadays, जैसे बोलते हैं, people are addicted now. मतलब you're at 12 years you are 12 to 13 years students, if we used to मतलब हम लोग उसको समझाते भी हैं कि नहीं ये आपके लिए गलत है, ये आपके लिए सही है. आप जैसे बोल रहे हैं कि आपके दोस्त हैं जो आपका इन्वायरमेंट, इट मीन्स इन्वायरमेंट मैटर करता है कि आपके फ्रेंड्स जो है वो बुकवर्म है, तो यू आर स्टार्टेड. बट व्हाट इफ जो बच्चे हैं जिनके सारे दोस्त बोलते हैं तुम किताब पढ़ते रहते हो, चलो थोड़ा गेम खेलते हैं, और वो एडिक्शन जो हो जाता है, उससे आपके हिसाब से क्या लगता है, क्या ऐसा किया जाए कि बच्चे आपकी तरह बुक्स के प्रति आकर्षित हो? आई थिंक वीडियो गेम्स अगर आपको बंद करना है, अगर आपकी इंटेंशन है वीडियो गेम को बंद कर देना, तो आपको पहले
थोड़ा 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 कम करना है टाइम. सपोज आप 2 घंटा खेलते हैं, Okay. उससे आप 1 आवर 50 मिनट्स कीजिए, फिर कमाते कमाते आप जो आपको जितना टाइम आप खेलना चाहते हैं, सपोज 10 मिनट कर दीजिए या फिर 30 मिनट्स कर दीजिए, जितना टाइम आपको चाहिए. और अगर आप मतलब बंद ही करना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके आप बंद कर सकते हैं. ऐसे ही मैं बंद किया था, मैं एक टाइम में बहुत एडिक्टेड था. और मुझे नहीं लगता कि वीडियो गेम्स अगर आप खेलेंगे मतलब every time it's wrong. I don't believe that, because many video games teach us things. So Okay. according to me, if you are addicted to video games, you should limit your screen time rather than entirely stopping it. Okay. So yeah, if you are really addicted to तो it. समिद्र इज सेइंग कि आप लोग को अपना टाइम लिमिट बनाना पड़ेगा और सब कुछ कीजिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, बट लिमिट से, ताकि आपको उसकी आदत ना पड़ जाए, है ना. हाँ. सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मेरे हमारे व्यूअर्स भी बहुत एक्साइटेड है कि आप बहुत अच्छा बुक लिखते हैं, बट इसका जो है आपको कब ऐसा एहसास हुआ कि नाउ आई कैन बी अ राइटर. एक तो पॉइंट आता है ना हाँ, कि यस आई कैन बी अ राइटर, तो तभी आपने ये 3 बुक्स लिखी. So- सो एक बुक के बाद ऐसा हुआ या क्या, एक मुझे थोड़ा सा रीजन जानना हाँ, है. सो बेसिकली मैं जब अपना पहला बुक लिखा था, मेरे मम्मी, my mother actually took it and she gave it to some of her professors in Jadavpur University, some of her colleagues, some of her Okay. seniors, to read the book. और उन्होंने जब किताब पढ़ा, उन्होंने बोला कि मेरा एक राइटिंग के प्रति एक मतलब मैं राइटिंग अच्छा कर सकता हूँ. और मेरे मम्मी मुझे आकर ये बोले, मतलब मेरे हम लोगों को तो पता ही नहीं था कि अगर बुक पब्लिशिंग के लिए वर्दी है या फिर नहीं. तो लोगों को हम लोग मतलब पहले लोगों को दिए कि थोड़ा पढ़ो, मतलब जो ऑनेस्ट बुक का रिव्यू के स्क्रिप्ट लिए. था सॉर्ट ऑफ, तो उसको ही दिए. और जो लोग पढ़े वो बोले कि बहुत अच्छा बुक है. अच्छा. और बहुत अच्छा, इसका राइटिंग के लिए थोड़ा इंटरेस्ट तो है. मतलब ये तो मम्मी ने मुझे बोला, तो मैं इसको सुनकर बहुत इंस्पायर्ड हुआ. और मतलब सेकंड बुक के लिए मतलब मेरे ओपिनियन में राइटिंग एक एडिक्शन की तरह है. Okay. एक गुड एडिक्शन की तरह है. एडिक्शन तो हर समय गंदा नहीं हो सकता नहीं, ना. बिल्कुल. एडिक्शन अच्छा भी हो सकता है, जैसे कि बुक रीडिंग का एडिक्शन, और जैसे कि राइटिंग की एडिक्शन. मेरे मतलब मेरा एक राइटिंग का सॉर्ट ऑफ एडिक्शन हो गया था. तो मैं जब अपना पहला बुक पब्लिश करने गया था देश पब्लिकेशन के उस जगह पे, they actually asked me that when will you get your second book. Okay. So that put me in thought what I should write about. I really thought for a long time, but the first thing that came to my mind was the lockdown. Even though I ignored it, I went on thinking about who I should write about, what I should write about. I thought, oh yeah, this topic is interesting. But at the end, I came back to lockdown. Actually, I was first hesitating because I actually did not write diary during the lockdown period, even though I have many memories about that period. Actually, I didn't write a diary during that time. So I was scared. I thought, how will I memorize, remember all that, Yes, all those yes, things I did that. But eventually I ended up memorizing the things, not memorizing, I remembered the things Yes, that I because did there. that things are unforgettable for Yeah, everyone. Those who have suffered from that journey. Those years were Yeah. really nice for me. So, if we will ask that out of these 3 books, which one is your closest, and I want to know the reason. क्या कारण So I think my first book is the closest to me, An Indian Kid in Japan, because if you see these 3 books, first book I wrote about Japan. I wrote more about my feelings, a Okay. little more about my feelings. I wrote about Japan a lot. This is my second book, The Lockdown Life of the Indian Kid. In my second book, I actually wrote about my feelings. I wrote about the state, the state of the scenario. Like, I am writing about COVID, like Okay. how COVID is affecting the lives of people. I wrote about how fruit sellers are selling their fruits, how people are suffering. I wrote about all that. And in my third book, The Indian Kid in Egypt, it's actually, I think The Indian Kid in Egypt I wrote about my feelings and experiences very much, but I wrote a lot about the history and mythology. So this is why this is my first book. It's this thin, and this is my third book. As you can see, it's pretty fat. This is 12-day experience, and my first book is a 4-month experience. But I still think that my first book is closest to me, as it marks my beginning in the field of writing, and I think this first book was the reason that I started writing at the first place, because the reviews of this first book were really nice, and many negative reviews came up. They told me to improve many parts of my books, even though they were like very few in number.
I took them as a positive feedback actually, and I improved my writing over time. As you can see, if you buy the three books, three of them, you can see a sort of evolution in writing after a Yes. while. Day by day you are Yeah. improving, isn't it? We can say that. So I just want to ask you an interesting question because as you know, script writing is the base of movie. Yeah. So if you want to turn one of your book into a movie, so whom would you like to cast as a main hero? I've never really thought about that, but if I were to, make a movie out of my books, I don't really watch movies, but Oh, that's great. I Do you have know no any idea, heroes? to I be know. honest. No idea. No I idea. think the hero will be you only. Okay, that's Okay. very interesting. No, okay. Because you are the hero of your books, I actually isn't it? don't watch Bollywood films much, That's so I great. don't know. So, so I want to know your reaction that if someone say you that you're too young to write a book, है ना बोलते बहुत कि अभी तुम बहुत बच्चे हो छोटे हो अभी क्या ही लिखेगा मतलब बिना आपके बुक पढ़े अगर कोई आपको जज करता है हाँ तो हाँ, आपको कैसा फील होता है? मुझे फील होता है कि वो पर्सन को मुझे मेरा बुक पढ़ना चाहिए, हम्म क्योंकि वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहा है। हम्म मैं नहीं बोलूंगा ये गलत पर्सपेक्टिव से देख रहा है, वो पर्सपेक्टिव से देख रहा है। इस बच्चे को इस एज में पढ़ाई करना चाहिए, हाँ अपना फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, जहाँ पे वो बुक्स लिख रहा है। तो मैं चाहूंगा कि वो एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखेगा, मेरे पर्सपेक्टिव में, जहाँ पे बुक राइटिंग मेरे लिए एक पैशन नहीं है, हॉबी नहीं है, मेरे लिए थेरेपी है, मेरे लिए एक कंफर्ट है, और मेरे लिए एक अच्छा एडिक्शन भी है। तो मेरे मेरे मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बुक्स मैं लिखता हूँ एक हॉबी के जैसे नहीं है। मुझे लिखना पड़ेगा इसलिए मैं नहीं लिखता, मुझे अच्छा लगता है लिखना इसलिए मैं लिख रहा हूँ। मैं उसे एक पैशन की तरह ट्रीट करता हूँ, यही मैं बोलना मैं चाहूंगा। बहुत आश्चर्यचकित हूँ क्योंकि मैं इस एज में मैं इतनी इंटेलिजेंट नहीं थी और हम दोनों में काफी गैप है और थैंक यू। ये जो है मैं अपने आप को खुद को मैं देख रही हूँ जब मैं आपसे बात कर रही हूँ कि मैं जब 12 साल की थी तो मेरे पास इतना नॉलेज तो नहीं था। मैं आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि जब हम लोग छोटे थे आपके एज के थे तो उस समय देखिए मोबाइल नहीं था मतलब यूट्यूब वगैरह नहीं था तो टीवी हम तो लोग टीवी था टीवी था हाँ। बट हम लोग को एक लिमिटेड टाइम दिया हाँ जाता था स्क्रीनिंग टाइम हम वही। लोग की लिमिटेड थी कि दिस इज द कार्टून टाइम हम लोग एक फिक्स कार्टून देखते थे हम लोग का हाँ फिक्स पता है, कार्टून था। दूरदर्शन वो हाँ सब था। दूरदर्शन एक नहीं मेरे टाइम पे कार्टून नेटवर्क बोल के ओ सीएन एक हाँ, चैनल था मुझे पता जिसपे है। आपका टॉम एंड जेरी आता था पावर पॉफ गर्ल आता था तो हम लोग वो देखते थे ठीक है और हम लोग का एक्टिविटी क्रिएटिविटी हम लोग बहुत करते थे। बट आजकल के बच्चे जो है क्रिएटिव चीजें कम कर रहे हैं टीवी देख रहे हैं मोबाइल देख रहे हैं। देखिए आपकी बात अलग है कि आप बुक लिख रहे हैं बट नहीं नहीं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो खेलना छोड़कर जो है मोबाइल में ज्यादा एडिक्टेड हो रहे हैं स्क्रीन टाइम उनका ज्यादा हो रहा है चाहे वो मोबाइल बोलूं या टीवी बोलूं स्क्रीन टाइम अगर मैं कंपैरिजन हाँ करूं हाँ स्क्रीन टाइम ज्यादा हो रहा है और क्रिएटिव वर्क नहीं हो रहा है जैसे आपने इतनी क्रिएटिव की और आपने 3 बुक लिख लिया सिर्फ हाँ। इस कम एज में पर बहुत सारे बच्चे ऐसे क्रिएटिव नहीं कर पा रहे। एक आप उसको कुछ टिप्स दे सकते हैं कि किससे और किस तरह वो भी क्रिएटिव हो सके अपने चीजों को जैसे आपने पहले कहा कि हाँ स्क्रीन टाइम को कम करना है ठीक है बट वो जो अंदर से जो आपके अंदर मोटिवेशन आता है वो कैसे आएगा? तो पहला चीज है कि अगर हर हर सबको कुछ चीज तो पसंद होगा, ये स्क्रीन टीवी छोड़कर। हम्म सपोज आपको ड्राइंग करना बहुत अच्छा लगता है, हम्म आपको फुटबॉल खेलना बहुत अच्छा लगता है, मतलब ड्राइंग करना, फुटबॉल खेलना, ये सब बहुत पॉजिटिव चीज है। अगर आप लोग को ये अच्छा लगता है तो आप लोगों को यही करना चाहिए, और स्क्रीन टाइम लिमिटेड करना चाहिए। बिकॉज स्क्रीन टाइम, मेरे मेरे मतलब से स्क्रीन टाइम, एज आई सेड, आप हम्म पूरा बंद नहीं करके थोड़ा देखो, लिमिटेड बट कम देखो, हम्म बिकॉज अब अगर ज्यादा देखेंगे तो जितना ज्यादा देखेंगे आप उतना एडिक्टेड हो जाएंगे, इसलिए। और स्क्रीन टाइम मतलब सबको, आई थिंक, मेरे मतलब मेरे पर्सपेक्टिव से सबको गिल्टी तो मतलब everyone should feel guilty, because if they watch for like 3 hours 4 hours, I'm pretty sure they themselves will feel guilty for it. And according to me, they should limit their screen time instead of completely like stopping stopping their screen time. So that's my opinion. okay honestly I want to listen this is no matlab just Yeah, your yeah. honest review that what you feel when your name is printed on a book how the feeling I just want to know because it's a great feeling for me I just assume if sometime I can be a writer but you are just having that opportunity so
So, कैसा लगता है आपको? मतलब मेरे फर्स्ट बुक जब प्रिंट हुआ था, मैं बहुत खुश था, मैं प्रॉपरली सो नहीं पाया था उस रात। ओके तो यही फीलिंग था, मुझे बहुत अच्छा लगता था, ओवरवेलमिंग लग रहा था एक्चुअली। और तब जब सेकंड बुक आया, वो मतलब उतना लेवल का जो पहला बुक में फीलिंग था वो थोड़ा कम हुआ, और फिर थर्ड बुक में वही मतलब और थोड़ा कम हुआ, क्योंकि अगर आप कुछ करते तो आई थिंक आई eventually it became normal, I think. So the first book, I feel, even now, if I get a book, if I write it, if I see my name on the cover, I feel very proud of myself that I managed to complete it. I thank God that uh, he helped me have the patience to complete it, helped me have the focus to write it, and that's it. I don't really feel that special. ओके It's just सो that I feel like, yes, I've completed it. That's what matters. you have achieved your goal, Yeah. that you have decided to write this book, you have completed, isn't it? Yeah. So does your friend used to treat you as a celebrity? No, my friends treat me as their friend. Okay. I don't like that, because whenever someone tries to, if someone approaches me as like, oh my God, you have written a book, will you be friends? I don't see them as a proper friend. I see them, they're trying to be friends with me because of my position. Yes. I mean, I have friends who like treat me as normal friends. I respect them more. Okay. Because my friend circle, I have friends who treat me as normal friends. I don't really like anyone treating as a I don't really like a friend treating me as a celebrity. I think that's very wrong. Okay, I would like friends to treat me as their friend, like be casual with me, be very normal. Yeah. very grounded. Okay, so I just want to ask you if you, well, your answer is so positive, as you have we have communicated for so long. So can I know the reason behind your positivity? Matlab, how you are and at this age, because I didn't remember that I was so positive or not. But children of your age, when I used to communicate with them, they used to say ऐसा नहीं भी हो सकता है, अच्छा ठीक है, वेरी कैजुअल अप्रोच, आर नॉट पॉजिटिव. ज्यादातर वो लोग नेगेटिव ही बातें करते हैं. सो आप इतने पॉजिटिव है, आप तब से आपने सारे आंसर्स बहुत पॉजिटिवली दिए. ये पॉजिटिव होने का रीजन क्या है? मैं पॉजिटिव तो रहता हूँ बुक लिखने के टाइम, मतलब ये सब रिलेटेड ही पॉजिटिव हूँ, स्कूल के रिलेटेड. मैं अगर कोई पूछेगा कि कल टेस्ट है ना, हाँ? मैं बोलूंगा नहीं भी हो सकता है. मैं उल्टा अप्रोच स्कूल के रिलेटेड मैं उल्टा अप्रोच देता हूँ. अच्छा. मतलब मैं ये सब रिलेटेड चीज में पॉजिटिव ही रहता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि पॉजिटिविटी ही, मतलब एंड में जो पॉजिटिव है वही सक्सीड करता है, और पॉजिटिविटी है की टू सक्सेस. That according to me वही सच है. तो आपको कौन पॉजिटिव बनाता है? मतलब आपका एनवायरनमेंट, आपके मम्मी पापा, I think my environment. Your environment. In my environment includes my parents, my family, my entire family, my friends too. I think it's a positive environment. Okay. Because environment is the last thing that affects a person's growth, according to me. तो मतलब अगर आपका माहौल आप पे विश्वास करे, आपका बिलीव करे, तो इस विश्वास से आप पॉजिटिव हो सकते हो. देख सकते हो आप समृद्धि कितना पॉजिटिव है. अगर बहुत सारे लोग ऐसे भी है, अगर कोई बुक लिखना चाह रहा है, कोई बोल सकता है अरे तू क्या लिखेगा, तू इतना बच्चा है. अगर मुझे लगता है ये सब फीडबैक भी मतलब गुस्सा होकर मार देंगे, ये सब नहीं करना चाहिए. हमें ये करना चाहिए कि वो बोला ना, तो मैं बुक लिख के उसको दिखा दूंगा, ये तो मैंने लिख दिया. Okay. तो ये उसको हम्बल करना है. Okay. मतलब उसको गुस्सा होकर मैं मार दिया, ये सब नहीं है. इतने छोटे उम्र में इनको ये सब पता है कि इस तरह से शांत रहना है, धैर्य रहना है. ये सब चीज मुझे मेरे मम्मी ने ही सिखाया है. वो तो मुझे दिख रहा है, दैट इज आपके मम्मी पापा का ही दिख रहा है फीडबैक मुझे सारा चीज. तो अभी हम लोग ने बहुत सारा सेशन कर लिया. अब हम लोग जो है एक रैपिड फायर राउंड खेलेंगे. इसका रूल यही है कि आपको 1 वर्ड में आंसर देना है. मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी. ये क्वेश्चंस हमारे जो है इंस्टा पेज से आते हैं. ठीक है, कि हम लोग जो है पहले अपने ऑडियंस को बता देते हैं कि हमारे नेक्स्ट गेस्ट कौन है. तो कुछ क्वेश्चंस वहां से आते हैं, तो ये क्वेश्चन वहां से है. तो ये क्वेश्चन थोड़े से अजीब हो सकते हैं. सो स्टार्ट करते हैं रैपिड राउंड. तो इसमें आपको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है. ओके, सो एक वन वर्ड, सेंटेंस में, जस्ट 1 वर्ड 1 सेंटेंस, ओके 1 सेंटेंस, व्हाटएवर. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. सो 1 वर्ड टू डिस्क्राइब योर राइटिंग स्टाइल. Casual. Okay. Favorite Indian author? Ruskin. No, he's not Indian author.
Sudha Murthy. Sudha Murthy. Okay. Night owl or early morning writer? I have to explain here. Okay, you can take 2 minutes. Okay, so basically I write whenever I feel like I can write, because according to me I cannot produce fine writing if I follow a routine, because writing according to me I don't follow a routine, because if I write, if it's a routine I will feel like I am forced to write at this time. Okay. So if I'm forced, I won't produce the fine writing. I will produce if I write whenever I feel like, yeah, I can write right now. So Yes. that Okay. feeling, I need it. to So write. no time limit Yeah, and yeah. no data. Okay. So what you prefer, book or Netflix? Definitely books. I Okay. mean, for free time, Netflix is okay. If your book could talk, what would they say to you? I think my first book would say, thank you for starting your journey with Yes. me. Second book would say, thank you for continuing your journey with me. And my third book would say, thank you for still writing. Okay, Me as that's your great. third book. So, Unexpected answer. Wow, thank great. you. So, if you could talk to your 8 years old back when you have started writing, okay, or they are thinking to Yeah, write, 9-year-old yeah. actually. So, who just started writing? That's 9 or so. Yeah, What yeah. advice would you give him? Your past. What Yeah, you? so first when I started writing a book, I was very confused. Like, how do I, okay, what do I do? I became very confused. I started stressing actually first. So I would go and advise that person, me, stop stressing. Everything will work out the way you want it to work out. You just need to have patience, focus, and dedication. Okay. That's what because at first, after returning to India, my PT2 examinations came up. Okay. So there was a sort of, I had to give balance between writing and studying. So at that time, I sort of felt like, oh my god, what should I do? My book will, oh my god. I was like বাংলায় বলে না থত মত খেয়ে যাও আমি ওরকম that was my condition. So I would have told myself to not worry, because everything would go out the way I planned it to go out. Okay. And I would just give my old self that advice. So right now you have said about the stress and you have said the answer also to manage the stress. तो इस एज में अगर स्ट्रेस होता है उसको मैनेज करना भी आता है समृद्धि को, तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा उपाय भी बता दिया समृद्धि ने कि किस तरह से आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, कि अपने आप को बोल के काम डाउन, आपने जैसे प्लान किया वैसे सब हो जाएगा. सो दैट्स ग्रेट. ये हमारे व्यूअर्स को आपने बहुत अच्छा ज्ञान दे दिया. सो वेयर डू यू सी योरसेल्फ, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि अपने आप को आप 18 साल में कहाँ देखना चाहते हैं? एक आपका प्लान होगा. सो व्हाट यू वांट टू, I just want to know your dream, kind of dream. I would actually like to study literature. Okay. Because I love English from the depths of my heart. I think it's a very nice language. I would love to study English. I would love to study literature. And my dream is to go to Oxford University to study literature. Okay. And I am very sure that I will somehow complete my dream, because I believe in myself about this thing. So I would try to write more books, because writing a book for me, as I said, it has become an addiction. Even though I put a break right now, because I'm currently not writing. I'll resume writing after my P2 examinations are over. Okay. I'm still writing a little. So yeah, so that's what I'm seeing. I am pretty sure I'll complete 10 more books. Okay. Okay, that's just an estimation. I don't As know. My you can boards are see coming. that every year he is writing one book. Okay, so you can assume till 18 वो क्या करेंगे. So बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. Thank you. हमारे चैनल का एक पंच लाइन है जो मैं चाहती हूँ आप कहो. See, let's talk where every stories matter. Okay, let's talk where every story matters. So मिलकर अच्छा लगा समृद्धि. आपने thank बहुत कुछ बताया और बहुत बहुत धन्यवाद. और इसी तरह मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये सारे बुक्स जो है एक बार पढ़ें, अपनी ऑनेस्ट रिव्यू दें. और अगर आप भी जानना चाहते हैं कि किस तरह से इस बुक को पब्लिश किया जाता है, या राइटिंग का कोई भी आप स्टाइल जानना चाहें, तो समृद्धि का जो है इंस्टा आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. आप उनसे बात कर सकते हैं, उनसे अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं. ही विल गाइड यू, ही विल डेफिनेटली हेल्प यू. और मिलते हैं फिर अगली कहानी के साथ. नमस्कार. अच्छा, मैं एक और बात मैंने आपके बारे में सुना है कि आप सिर्फ कहानी नहीं लिखते हो, आप कविताएं भी लिखते हो. You have written poems also. Yeah, मैं मेरा थर्ड बुक द इंडियन किड इन इजिप्ट में लिखा हूँ. मतलब नाइल रिवर जो है इजिप्ट में बहुत फेमस रिवर, हम बंगाली में उसे नील नद बोलते हैं. नील नद मतलब ब्लू रिवर.
मैं जब नाइल रिवर सर्च किया था, मुझे दिखा था, मुझे उतना ब्लू नहीं लगा था, अच्छा। पर मैं जब वहां गया इतना ब्लू, मैं तो देखकर मेरा होश उड़ गया था। मैंने सोचा इतना ब्लू मैं बुक में डिस्क्राइब करूंगा इतने एग्जेजरेट करके तो बहुत मतलब अच्छा नहीं लगेगा। मैं इतना लिखूंगा तो मतलब 2 चैप्टर ही हो जाएगा नाइल का डिस्क्रिप्शन के। अच्छा। तो मैंने सोचा एक कविता लिखते हैं जो शॉर्ट होगा, कॉम्पैक्ट होगा, अच्छा डिस्क्राइब भी कर लेगा और रीडर्स को पढ़ना भी अच्छा लगेगा। मैंने ये बहुत सोचकर लिखा था, मुझे बहुत मतलब मुझे ज्यादा टाइम नहीं लिखा था। मैं कविता ऐसे मन करता है मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। तो ये रहा नाइल के ऊपर। ओ डियर नाइल, words cannot express your beauty, seeing you the toughest of beings smile, you are the bluest of blue, your charm is the truest of true, you are Egypt's pride, you help the human race grow, I am grateful to see your waters melodiously flow, so swift and agile, thank you dear Nile. So इस कविता में थोड़ा मेटाफर्स भी है और फिगरेटिव सेंस में भी कुछ वर्ड्स है। तो मतलब ये मिक्स करके मुझे लगता है कि ये कविता सबको पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा।